में इंडिया आर्मी ने इस टैंक को अपनी हिरासत में ले लिया था। ये सैफरॉन फील्ड है, ये अगस्त में इसमें लगाया जाता है सैफरॉन। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, ये है पहलगाम के रास्ते में। ड्राई फ्रूट टेस्ट करने के लिए। आजकल स्नोफॉल की वजह से ये पेड़ सूख गए हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल सेब लगा दिए हैं। कुछ लोग सेल्फीज लेते हैं इसके। ये होटल है, इस जगह को बोलते हैं एप्पल वैली। ये पहलगाम के रास्ते में पड़ती है। ये आरू वैली है। Open air, side by side we sway there in all the colors. Folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen and all the colors. Summer love. Colors, summer love. Remember the lazy river day canoe, bathing in the turquoise blue, losing track of time with you. Another peach pie sunset view. Sleeping in the afternoon, no place to be and nothing to prove.
sure something I could use. A cure for the air-conditioned blues. Could do you some too. A little bit of sunlight. पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ासकर जब आप इतनी खूबसूरत जगह पे हो तो हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये चंदनवाड़ी कहलाती है। ये आखिरी जो गांव था उसके बाद ये वादी पड़ती है, ये चंदनवाड़ी। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बेताब वैली है, जिसमें अभी हम लोग जाके घूम के आए थे। ये अभी हम लोग ऊपर से सीन ले रहे हैं इसका, बहुत खूबसूरत है। कौन सा रास्ता कहलाता है आमिर भाई? चंदनवाड़ी का रास्ता कहलाता है। ये सुबह सुबह गाड़ी आती है बर्फ हटाने के लिए। ये एरिया चंदनवाड़ी का है। बहुत ठंडी है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर है।